Bismillahirrahmanirrahim. We are continuing the topic of net realizable value of inventories, and in previous videos we have covered the definition of net realizable value and the computation of net realizable value, how we compare cost and net realizable value, what are the circumstances that lead to the inventory write down whenever the cost exceeds the NRV. Okay, we have covered that in previous videos. We have also covered the accounting entries, and uh, we have covered the topic of NRV in much details. Okay, today we are going to cover another aspect of net realizable value. So far we have seen that whenever there are circumstances when cost exceeds the net realizable value, we have to write down the inventories up to the net realizable value. We have seen that through the accounting entries. But if circumstances reverse and the situation where cost is exceeding the NRV no longer exists, it means that now another situation arises where NRV is exceeding the cost. So what we will going to do? So today we will cover that in this example, and I have created this example to show you if NRV reversal arise, which I just explained. Okay, what is going to be done in the books of accounts and how we will do that through the accounting entries. We're going to see that in this video. अभी तक हमने एनआरवी का जो टॉपिक कवर किया है उसमें हमने एनआरवी की डेफिनेशन देख ली थी और हमने ये देख लिया था कि इन्वेंट्री से केस में जब कभी ऐसा हो कि कॉस्ट एक्सीड कर जाए नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू इन्वेंट्री को कैसे राइट डाउन करते हैं अप टू इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब हम आज की इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर कभी ऐसा हो कि प्रीवियसली हमने इन्वेंट्री को राइट डाउन किया हो एनआरवी तक और सब्सिक्वेंटली ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं और ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए, यानी कि फिर ऐसा हो कि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से एक्सीड कर जाए, तो क्या हमें करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ये हम आज देखेंगे इस वीडियो में. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल डिजाइन की है जिसमें इनिशियली हम इन्वेंट्री को राइट डाउन करेंगे क्योंकि वहां पे कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी एनआरवी से, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि एनआरवी जो है वो एक्सीड कर जाएगी कॉस्ट से. तो फिर हम ये जो सेकंड पार्ट है जहां पे एनआरवी एक्सीड करती है कॉस्ट से, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे इस एग्जांपल में कि वो हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये इस एग्जांपल में हम आज देखेंगे. लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल. ABC company is a distributor of locally manufactured tires. On June 30, 2022, ABC has an inventory of 120 locally manufactured tires at a unit cost of rupees 6,000. Okay. Normal selling price of this tire is rupees 10,000 per tire. Okay. So selling price is given 10,000 and the cost is 6,000. Okay. During June 2022, the government of the country allowed the import of tires from different global tire manufacturers across the world. Import of tires was banned previously in the country. So government brought some regulations and allowed the import of tires into the country. Previously that import was completely banned. It is expected that imported tires would be sold in the local market at a selling price of rupees 5,000 each to the end customer. So this is the selling price to the end customer, and we can see that this is on a lower side as compared to the locally manufactured tires which is costing rupees 6,000. Okay, so the selling price of imported tire is on a lower side. The perception in the market is that quality of the imported tires is much better than the local tires. Okay, so this was the initial information. After this recent change, ABC company is having difficulty in selling the existing stock of tires.
Definitely they will have the difficulty because imported tires are in the market, which are much cheaper and which are better in the quality as compared to the locally manufactured tires, so they must be having difficulties. On June 29, sales team of ABC informed that they have located a tire dealer who is ready to purchase 60 tires from their current stock of locally manufactured tires at a price of rupees 3,500 each, and willing to sign a deal with ABC for this purchase. So their sales team was struggling and they have identified a tire dealer who is ready to purchase 60 tires from them, but at a very reduced selling price, which is 3,500. Okay, so 3,500 is the selling price at which half of their current stock can be sold. Okay, let's see further. The management of ABC agreed for this deal, and 60 tires were delivered and cash was received in the bank during the first week of July 2022. Okay, so they have sold half of their inventory of tires, which are like 60 tires. They have sold and they delivered to the dealer they were talking to, and cash is also received in the bank during the first week of July. So this deal is done. Now, initially they have 120 tires, 60 were sold during the first week of July. Let's see further. Later in July, due to adverse market conditions for the local tire manufacturers, the Tire Manufacturing Association (TMA) of the country called for a countrywide strike and put a complete shutdown of tire industry, which resulted in unemployment of thousands of workers. Okay, so uh, like definitely these are very adverse circumstances for the local tire manufacturers. They call for some protest and they called for a strike and they shut down their operations across the country. Tire Manufacturing Association raised a demand to impose a complete ban on the import of tires with immediate effect. So that was the demand by the Tire Manufacturing Association, because that import of tires was uh, badly affecting their business. In response to this strike, government started negotiations with Tire Manufacturing Association representatives, and after successful negotiations in the last week of July, government announced a complete ban on import of tires effective from 1st August 2022. Okay, so the Tire Manufacturing Association raised some demands, and their primary demand was to put a complete ban on the import of tires, and luckily government has agreed to it and announced in the last week of July that effective from 1st August there will be no import of tires into the country. Okay, consequently the market conditions improve. Yes, definitely the market conditions would be improved because again there is a complete ban on import of tires. So for the Tire Manufacturing Association and all the tire manufacturers, these are favorable conditions. So consequently the market conditions improve and become normal for the local tire manufacturers. On July 31st, 2022, ABC has an inventory of 60 tires remaining from the old inventory. So this data was given for July 31st inventory. They had 60 tires in the inventory. Further, the company has also placed new orders for the purchase of local tires that will be received by the mid of August. So it seems that after the negotiations with the government and the recent announcement by the government, the market conditions becomes favorable and it is back to normal as it was the uh, before they allowed the import of tires from the global market. So now, after this recent announcement, the situation is back to normal and the market is now back to normal. So, in this example, we have seen that initially there were some
regulations, government regulations, due to which market conditions were adverse. And then after that, some events happen, negotiations happen with the government, and government again announced. So the situation becomes normal, back to normal. Okay. So in this data, we can segregate uh, the data in two parts. First, we'll look upon the events that happened in the month of June, and then we will going to see what events are happening in July, and we will make the accounting entries accordingly. So the first part of the requirement is that we need to prepare the journal entries related to inventories during the month of June. Okay. So in June, we only have the inventories at the end of the month, okay, which is 120 tires, and the unit cost of those tires is 6,000. Normal selling price of this tire is rupees 10,000 per tire, and there are some events that are happening in June, which indicates that there might be a scenario that the cost of the inventory is exceeding its net realizable value. And what is that? The thing is, like, the government of the country allowed the import of tires from different global manufacturers. Okay, previously there was a complete ban. It is expected that the selling price of the local imported tire would be 5,000, which is much lower than the cost of the locally manufactured tire. It indicates that the cost is exceeding the net realizable value of the inventory. It might indicate that that will happen. Okay, so let's see further. The perception in the market that quality of imported tire is much better than the local tires, and after this change, ABC company is having difficulty. Definitely they will have difficulty in selling the stock. Okay, so their sales team must be struggling, and they identified another dealer who can purchase 60 tires at a price of 3,500. So this 3,500, I am assuming that this is the estimated selling price, and this will be the net realizable value of the inventory as of 30th June. Why this is net realizable value? Remember that the definition of net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. So in this example, again, we don't have any estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. So we can assume that this estimated selling price will be my net realizable value. So we need to value the inventory as of 30th June at the net realizable value, because this 3,500 is much lower than the cost, which is 6,000. So here my cost exceeds my net realizable value. So first entry I will make on June 30, 2022 will be for the inventory write down. Okay, so the entry will be, we all know that what entry we need to make for the inventory write down. So we need to expense out the amount of write down, and we will debit the cost of goods sold, and we will credit the net realizable value provision. And how I calculated that? The cost of inventory is like 6,000 per unit multiplied by 120 units that was in hand at June 30. It gives me a value of 720,000. The net realizable value is 3,500 per unit multiplied by 120. It gives me 420,000. So the difference of these two is my amount of NRV write down. So this entry will be done with the amount of NRV write down, which is 300,000. So cost of goods sold debited by 300,000, and NRV provision is created by 300,000. Okay, so this is the first entry in the month of June. Okay, as per the data. Now we'll move towards what happened in July. So on 29th June, sales team informed that, like, there is another tire dealer who is ready to purchase their stock, and management of ABC team
has agreed for this deal and 60 tires were delivered and cash was received. So it seems that sale happened in the month of July, and so we'll move to July, okay, and we will record the sales entry which is happening in the first week of July. Okay, so sale is happening at a price of 3,500 and 60 tires were sold. So what I did here is 60 multiplied by 3,500, it gives me 210,000. So I debited my bank by 210,000 and credited the sales with the same amount. It gives me the sales entry, and we all know that with the sales entry we also need to record the cost of sales. So cost of sales entry, just pay attention here. This cost of sales, we all know that cost per unit per tire is 6,000. So and we sold 60 tires, so 60 times 6,000, it gives me 360,000, and I will debit my cost of goods sold with this amount and I will credit my inventory with this amount. But we all know that this inventory has also been written down to the net realizable value. So what we need to do here is we need to release the provision of NRV for that inventory which has been sold. Okay, so 60 units were sold. So what we will do, we'll utilize the NRV provision of those 60 units. So what accounting entry I will do here is NRV provision debit and cost of goods sold credit. Okay, and this 100 with the amount of 150,000, and how this 150,000 I come up is like 60 units multiplied by 6,000 minus 3,500, which is 2,500. Okay, so the NRV provision which was initially created for 120 units, out of that 120 units 60 were sold. So I need to release the provision of those 60 units that were sold during the month of July. So I will make an entry NRV provision debit and cost of goods sold debit. And the impact of that entry will be, if you see the impact here, I am debiting in the first entry of cost of goods sold, I am debiting 360,000 cost of goods sold by 360,000, and then in the second entry I am crediting the cost of goods sold with an amount of 150,000. So the net impact of cost of goods sold is 210,000, okay, which is equal to my sales amount, because we sold the inventory at 3,500 and we write down the inventory at NRV, which is again 3,500. So sales minus cost of goods sold equals to 0. Okay, so here we can see that our cost of goods sold is also 210,000, which is equal to sales amount. Okay, and that happens because this inventory was already written down to the net realizable value, which is 3,500 per tire. Okay, so these are the entries for the sale. Okay, here we learned one thing, that whenever the inventory is sold which was previously written down to net realizable value, we need to release the provision of NRV for that inventory which is sold. Okay, that's why we made this entry which I highlighted here. Okay, अच्छा, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हमारी जून में क्या ट्रांजैक्शन है. देखें, जून में हमें 30 जून की इन्वेंट्री दी हुई थी 120 यूनिट्स. ठीक है, हमने अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करनी है. हमें पता है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसकी कॉस्ट है पर टायर 6,000 और हमारे पास 120 टायर्स हैं. जो सिचुएशन हमें यहाँ बताई गई है उसमें ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट अलाउ कर दिए टायर्स की, जिसकी वजह से मार्केट में इंपोर्टेड टायर्स आ गए हैं, और इंपोर्टेड टायर्स जो एंड कस्टमर को सेल होंगे वो 5,000 रुपीज पर टायर के हिसाब से होंगे. ठीक है, जो देखने से हमें ये लग रहा है कि एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हमारी तो कॉस्ट ही 6,000 है, और अगर इंपोर्टेड टायर
5000 का बिकेगा तो फिर कौन हमारे टायर्स जो है वो 6000 या उससे ज्यादा की प्राइस पे लेना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमें एनआरवी टेस्ट करना पड़ेगा इन्वेंट्री का। और जब हमने एनआरवी, हमने फर्दर डेटा को देखा तो हमें पता चला कि एनआरवी जो है वो सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर जो है हमारे टायर, एग्जिस्टिंग टायर्स जो स्टॉक है हमारा टायर्स का, वो बिक सकता है, वो है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और वो किस तरह से हमें पता चली कि सेल्स टीम ने आइडेंटिफाई किया एक डीलर को जो कि रेडी है हमारे टायर्स परचेज करने का, मतलब हाफ ऑफ द स्टॉक जो है ना वो परचेज कर लेगा। मतलब हमारे पास 120 टायर्स इस वक्त पड़े हुए, 60 वो परचेज करने को तैयार है, लेकिन वो जो प्राइस दे रहा है हमें, वो दे रहा है 3500, विच इज मच लोअर देन द कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई estimated cost of completion और estimated cost of necessary to make the sale ये है नहीं, तो इसलिए हम अज्यूम करेंगे जो estimated selling price है वो ही हमारी net realizable value है। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कि कॉस्ट एक्सीड कर रही है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, ये डेटा में नजर आ रहा है, कॉस्ट है 6000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 3500। जब कॉस्ट एक्सीड कर जाए तो हमें एनआरवी को राइट डाउन करना पड़ता है, और राइट डाउन का अमाउंट हमने 6000 और 3500 का डिफरेंस निकाला 2500, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 120 टायर्स जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है हमारे पास, और हमारे पास अमाउंट आ गया 300,000 का। और 300,000 से हमने एनआरवी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दिया। और राइट डाउन की इन्वेंट्री, राइट डाउन की एंट्री आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया जाता है 300,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया मैंने 300,000 से, और एनआरवी प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया 300,000 से। तो ये मेरी 30 जून की एंट्री हो गई, और इन्वेंट्रीज को मैंने राइट डाउन कर दिया एनआरवी पर। ठीक है, पहले वो कॉस्ट पे रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि कॉस्ट एक्सीड कर रही है एनआरवी से, तो मैंने उसको कॉस्ट से कम करके मैं एनआरवी पे लेकर आ गया। अब जो इन्वेंट्री है मेरी वो इस वक्त एनआरवी पे आ गई है। अच्छा, अब जून में कुछ ट्रांजेक्शन हुई और वो पता चला कि जो 120 टायर्स का स्टॉक था उसमें से 60 टायर्स जो है वो हमने सेल कर दिए एक डीलर को। यही 3500 जो प्राइस उसने ऑफर की थी, जो एनआरवी भी है हमारी, उस पर हमने सेल कर दिया। अच्छा, तो उसके पैसे भी हमारे पास आ गए बैंक में। और ये देखें, ये जो एंट्री करी है मैंने, ये 60 मल्टीप्लाई बाय 3500, तो ये मुझे देता है 210,000। तो इससे मैंने अपनी सेल्स की एंट्री करी। सेल्स की सिंपल एंट्री आपको पता है, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, बैंक में डेबिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स के साथ साथ आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी आप हमेशा करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डेबिट कर दी मैंने कॉस्ट के अमाउंट से। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं 60 टायर्स मल्टीप्लाई बाय 6000 जो कि मेरी कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, आपको पता है कि जब मैं एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करता हूं तो मैं कॉस्ट के अकाउंट को, इन्वेंट्री कॉस्ट के अकाउंट को नहीं छेड़ता, बल्कि मैं एक सेपरेट अकाउंट यूज करता हूं एनआरवी प्रोविजन का, जो कि मैंने आपको इसका रीजन पहले भी बताया है वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री मैंने कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्रीज क्रेडिट। अमाउंट जो यूज किया है वो वही 6000 जो कि उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। लेकिन इस इन्वेंट्री को मैं जून में राइट डाउन कर चुका था एनआरवी तक, तो मेरे पास इन 60 टायर्स का एक एनआरवी प्रोविजन भी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, जो कि है 2500 के अमाउंट से। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो ऐसे कैलकुलेट हो रहा है कि 60 टायर्स मल्टीप्लाई बाय 2500। ठीक है, तो ये मेरे पास 150,000 का प्रोविजन है। अब होता क्या है कि जब ये इन्वेंट्री राइट डाउन हुई थी जून में और जुलाई में ये सेल हो गई, तो अब जो इसका एनआरवी प्रोविजन हमारी बुक्स में है, इस प्रोविजन को भी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि जब इन्वेंट्री सेल हो गई तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो भी आप रिकॉर्ड कर दें। ठीक है, तो एनआरवी प्रोविजन जो मेरे पास था इस इन्वेंट्री से रिलेटेड, उसको भी मैंने रिलीज कर दिया। और रिलीज मैं कैसे करूंगा? एनआरवी प्रोविजन जो कि नॉर्मली एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए मैं उसको डेबिट करूंगा। एनआरवी प्रोविजन को मैंने डेबिट कर दिया,
और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आप देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इनिशियली 360,000 से डेबिट हुई थी, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने 150,000 से क्रेडिट भी कर दिया। ठीक है, तो जो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आई वो आई 210,000 विच इज इक्वल टू माई सेल्स वैल्यू। क्योंकि देखें, सेल्स उसने कहा था कि सेल होगी 3,500 पे, तो हमने हमारी कॉस्ट तो 6,000 थी, लेकिन हम कॉस्ट को भी राइट डाउन करके एनआरवी 3,500 पे ले आए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन अराइज हुई है वहां पे ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है इसमें, यानी कि एक तरह से कह लें एक्चुअली लॉस तो है, जो कि हमने जून में ही बुक कर दिया था, वो एनआरवी का लॉस था, लेकिन लेकिन इस पर्टिकुलर सेल ट्रांजैक्शन में आपको लॉस नजर नहीं आएगा। ठीक है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी एनआरवी राइट डाउन होती है तो वो उसी वक्त हम बुक कर देते हैं, हम इसका इंतजार नहीं करते कि वो सब्सिक्वेंटली जब सेल होगी तो बुक करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इंक्रीज के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने सेल्स की इंक्रीज भी बुक कर ली। तो यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो ये है कि कोई ऐसी इन्वेंट्री जो कि प्रीवियसली राइट डाउन करके एनआरवी तक उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया हो, अगर वो सब्सिक्वेंटली सेल होती है तो उसका एनआरवी प्रोविजन जो है उसको भी हमें रिलीज करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेंट्री हमारी बुक से आउट हो गई यानी सेल हो गई, उसका प्रोविजन भी हम अपनी बुक्स में नहीं रख सकते, तो उसके प्रोविजन को भी हमें रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट है यहाँ पे। So far we have seen the increase in the month of June and in the first week of July. Now let's move to the second part of the data. Later in July, due to adverse market conditions for the local tire manufacturers, the Tire Manufacturing Association of the country called for a countrywide strike and put a complete shutdown of tire industry, which resulted in unemployment of thousands of workers. The Tire Manufacturing Association raised a demand to impose a complete ban on the import of tires with immediate effect. In response to this strike, government started negotiations with the TMA representatives, and after successful negotiations, in the last week of July, government announced a complete ban on import of tires effective from August 1, 2022. Okay, so there was a strike. The local tire manufacturers called for a strike, and it resulted in unemployment of many various workers. So in response to that, government started negotiations with those tire manufacturers, and ultimately the government again imposed a ban on import of tires. Okay, so this is a favorable situation for local tire manufacturers because uh, there will not be any import of tires, there will not be any tires coming from outside the country, so they will manufacture their tires, they will again go back to the same position which was prior to June when this change was announced by the government. Okay, so it seems that the circumstances that were created in June, which were adverse for the local tire manufacturers, are reversed now. Okay, and situation is coming back to normal, and it also given in the data. Consequently, the market conditions improve and become normal for the local tire manufacturers. On July 31st, 2022, ABC has an inventory of 60 tires, which was remaining from the old inventory. Okay, remember that 60 tires we sold already. Further, the company has also placed new orders for the purchase of local tires to be received by the mid of August. It seems that company is going back to normal, and now the market conditions are favorable and back to normal, which used to be previously before June. Okay, so it seems that again we need to review the value of the inventory, and as per the international accounting standards, whenever there is a situation which indicates that inventories that were previously written down, they might get reversed. Okay, due to these type of circumstances, we need to review the inventory again, and we need to look upon whether
the cost is exceeding the net realizable value or the net realizable value is exceeding the cost. Okay, so we need to review the inventory again. From the circumstances given in this data, it seems that the circumstances are back to normal. The market condition is again favorable. So it holds that we can again sell those locally manufactured tires at a normal selling price, which was rupees 10,000 per tire, because there is no imported tires in the market. So we can sell that the locally manufactured tires at rupees 10,000 easily. Okay, and this 10,000 is my new net realizable value of the inventory, and which is more than my cost. So as per the criteria which says that inventory shall be measured at lower of cost and net realizable value. So the cost is lower here, which is 6,000. So I have to value the inventory at cost. So currently I have 60 tires on hand. Okay, the original cost of those 60 tire is like 6,000 per tire. Okay, which was previously written down in the month of June to net realizable value, which was 3,500. So again I will reverse that NRV provision that was created in June. Okay, so what I will do, I will simply reverse the net realizable value write down that was created in June for that inventory which is currently on hand. So on July 31st, I have 60 tires. Okay, and I will reverse the provision for that 60 tires, which is like how I created that: 60 tires multiply by 2,500, it gives me 150,000. So this 150,000 I debited my NRV provision and I credited my cost of goods sold. Okay, so the key point here is that I can reverse the NRV up to that extent to which I created the expense. Okay, I cannot exceed this amount because that will be wrong. Okay, तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे जब सर्कमस्टांसेस रिवर्स हुए तो हमें जो एनआरवी प्रोविजन हमने पहले क्रिएट किया हुआ था इन्वेंट्री को जब हमने राइट डाउन किया था, तो उस एनआरवी प्रोविजन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और अगेन हमारे लिए फेवर में आ गए हैं। और उसका रीजन ये है कि जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो ज्यादा हो गई है। क्यों? ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? जो 10,000 हमारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, अब हम उस पर आसानी से अपनी इन्वेंट्री सेल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। तो अगेन हम अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट के ऊपर लेके आएंगे और कॉस्ट पे लाने के लिए हमें जो एनआरवी प्रोविजन हमने क्रिएट किया था पहले जून के महीने में, उसको हम रिवर्स कर देंगे। और यही एनआरवी प्रोविजन अभी हमारी बुक्स में पड़ा हुआ है क्योंकि जो बाकी 60 टायर्स का था वो तो क्योंकि ऑलरेडी इन्वेंट्री सेल हो चुकी है तो वो तो हम पहले ही रिलीज कर चुके थे। ठीक है, तो अब अगर आप एनआरवी प्रोविजन का अकाउंट देखें तो पहले एनआरवी प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हुआ 300,000 से, फिर जब 60 टायर्स सेल हुए तो एनआरवी प्रोविजन 60 टायर्स का रिलीज कर दिया और ये डेबिट हो गया 150,000। और फिर जब हमने रिवर्सल किया ड्यूरिंग आफ्टर दिस चेंज, जब ये गवर्नमेंट ने दोबारा इंपोर्ट को बैन कर दिया, तो जो रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी उसका जो प्रोविजन हमारे पास था उसको हमने डेबिट कर दिया। तो अब हमारे पास एनआरवी प्रोविजन बुक्स में से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इसकी इंक्रीज है। और इसमें की पॉइंट ये है कि जब आप रिवर्स करते हैं, जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं और आपको रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है, तो आप उतना ही अमाउंट रिवर्स कर सकते हैं जितना आपके पास इन्वेंट्री ऑन हैंड है और जितना आपने क्रिएट किया था एक्सपेंस। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, एक्सपेंस को रिड्यूस करते हैं अपनी, जैसा कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो ये इसकी एंट्रीज है जो होंगी
अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है। The next part of this requirement, which is to prepare the extracts of balance sheet, I will cover that part in the next video. Okay, ये जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट हैं वो कैसे प्रिपेयर होंगे और इन्वेंट्रीज जो हैं वो 30 जून पे और 31 जुलाई पे कैसे रिपोर्ट होगी बैलेंस शीट में। आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ सीखी है वो ये कि जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस हों और आपने आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट जो है एक्सीड कर जाए नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो उसको हम राइट डाउन करते हैं अप टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये हमने देख लिया, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी हमने देख ली। सेकंड पार्ट हमने ये देखा है कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री जो कि प्रीवियसली रिटन डाउन की गई हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक, अगर वो सेल हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। देखें उसकी से जो एंट्रीज हैं सेल की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो तो नॉर्मल एंट्रीज जैसे होती हैं वैसे ही होंगी, लेकिन साथ साथ उसके ये होता है कि उस इन्वेंट्री का जो कि अब सेल हुई है उससे रिलेटेड जो एनआरवी प्रोविजन होता है हमें उसको रिलीज करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और इसकी एंट्री हमने देखी कि एनआरवी प्रोविजन को हम डेबिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने सेकेंड पार्ट देखा इसका। और थर्ड चीज जो हमने देखी कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री जो कि पहले जो है प्रीवियसली राइट डाउन की गई हो और वहाँ पे सिचुएशन ये हो कि कॉस्ट एक्सीड कर जाए नेट रियलाइजेबल वैल्यू से और बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से ऐसा हो जाए कि अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कॉस्ट से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं। उस केस में हमें एनआरवी प्रोविजन जो पहले हमने क्रिएट किया होता है उसको हमें रिवर्स करना पड़ता है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हमने देखी कि एनआरवी प्रोविजन को हम डेबिट कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस पीरियड में ये सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसी पीरियड में उसी अकाउंटिंग पीरियड में ये रिवर्सल की एंट्री होती है। ठीक है। हम किसी प्रायर पीरियड में जाके इसको सही नहीं करते, हम उसी पीरियड में इसको करेक्ट कर देते हैं। यानी कि जिस पीरियड में एनआरवी लॉस अकर होगा उसी पीरियड में लॉस बुक हो जाएगा और जिस पीरियड में एनआरवी की सिचुएशन रिवर्स होगी उसी पीरियड में एनआरवी प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो जो इवेंट जिस पीरियड में होगा उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमने आज की वीडियो में देख लिया। If you have any questions related to net realizable value of inventories, please mention your questions in the comment section. If you like this video, kindly hit the like button. And if you have not subscribed this channel yet, please subscribe this channel. I'm concluding this video. Thanks a lot.